राज्यसभा में अरुण जेटली ने अपने बयान के दौरान बहुत बड़ी बात कही है और जेटली ने सवाल न्यायपालिका के दखल पर उठाया है। उत्तराखंड मामले में न्यायपालिका के दखल देने के फौरन बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। राज्यसभा में जेटली ने कहा कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए। Interest of Indian democracy not to go on this misadventure. And I'll give you the good reason why. With the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last of the only powers that you have left. Taxation is the only power which states have. It would be wholly misconceived for any party to say, let us hand over the taxation power also to the judiciary. That is your proposal. Please let me just complete. But let me tell you, let me give you the history of that proposal. Anandji, just give me 1 minute, then I'll yield after this. In the original GST which was proposed and introduced by you in Parliament, you had a dispute settlement. The present Honorable President had introduced it. The Standing Committee went into it and gave a unanimous view that it is dangerous to have a dispute redressal, that if center and states can't decide कि कितना टैक्स लगेगा किस आइटम पे, तो सुप्रीम कोर्ट जज की एक कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। तो कृपया ये मत कीजिए। और कांग्रेस के जितने सदस्य थे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने भी सहमति की। मैं अभी देख रहा था जब मैंने कहा डोंट हैंड ओवर द टैक्सेशन पावर टू द कोर्ट, ईच वन ऑफ योर मेंबर्स वाज थंपिंग द डेस्क। And therefore the standing committee unanimously said that this power must be decided between it's a political issue. Supposing Odisha says this tax is required, between Odisha and the center, between Odisha and the other states, it has to be sorted out politically. You can't hand over this power. I have not read the judgment, but today I have seen on television that we have the NDRF and the SDRF, the State Disaster Relief Fund and the Central Relief Fund. The Supreme Court has directed us to create a new fund. Now we have passed the Appropriation Bill. Disaster Mitigation Fund. Mr. Bhupender Singh just now mentioned. Now we have already passed the Appropriation Bill. From where do I get this extra money outside the Appropriation Bill to comply with this direction of the Supreme Court? Can't you see step by step, brick by brick, the edifice of India's legislature is being destroyed? And outside the Appropriation Bill, we are being told create this levy, create this fund by an institution other. There can't be any tax. There can't be any expenditure unless it is approved by Parliament. So today, when I mentioned it, Jairam, please don't misunderstand me. If a speaker's ruling is going to be subject to judicial review, if India's budget making is going to be subject to a court. उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुण जेटली का यह बयान आया है। ऐसे में जेटली ने विपक्ष से भी अपील की है कि इस मुद्दे पर सरकार का साथ दें, वरना आने वाले दिनों में ये परेशानी सभी के साथ हो सकती है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने सरकार का दर्द बयां करते हुए कहा कि अब लगता है कि सरकार का काम बजट तैयार करना और टैक्स वसूली करना ही रह गया है, क्योंकि बाकी कामों में किसी न किसी तरह से अदालत का दखल हो जाता है, जिससे वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाता है। तो वहीं जीएसटी जैसे मुद्दे पर विपक्ष से सहयोग की अपील भी अरुण जेटली ने की, क्योंकि ये बिल जनता के हित में है